हेल्दी इंडिया प्रॉस्परस इंडिया के विजन को साकार करने के लिए देश भर में टीबी के खिलाफ जंग तेज हो चुकी है। गुजरात का गिर सोमनाथ जिला इस लड़ाई में एक मिसाल बनकर उभरा है। केंद्र सरकार के सहयोग से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार गिर सोमनाथ में टीबी उन्मूलन के लिए भागीरथ अभियान चला रही है। इसके तहत हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों का हेल्थ चेकअप कर रही है। તેમજ એક તબીબી સહાય યોજના બી સરકારની છે કે જેમાં તમે તબીબી બિલો રજૂ કરીને સારવાર મેળવી શકો છો। એમાં પ્રધાનમંત્રી દ્વારા પણ એક સહાયની યોજના લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે। એમાં કોઈ પણ ટીબીના પેશન્ટને કોઈ પણ રાજકીય આગેવાન હોય, કોઈ પણ સામાજિક કાર્યકર હોય, પોતે દત્તક લઈ અને એને પોષણ કીટ આપવાની યોજના સરકાર તરફથી છે। અને સરકારની જે યોજના છે બહુ સારી છે અને દરેક લોકોને સેવાડાના માનવી સુધી આ યોજનાનો જે લાભ લે લોકો એ બદલ સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર। जिले में इन दिनों एक्टिव केस फाइंडिंग यानी ACF ड्राइव जारी है। यह ड्राइव सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और जंगल से सटे इलाकों तक भी इसकी पहुंच सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद जिले में कई NGOs, उद्योगपति, समाजसेवी और निजी अस्पताल भी इस मुहिम से जुड़े हैं। इन संस्थाओं से जुड़े लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों की मदद कर रहे हैं। मरीजों को सरकारी सहायता के अलावा अतिरिक्त पौष्टिक आहार किट भी दी जा रही है। ત્યારબાદ એને દવાઓ પણ ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે અને મેડિકલ કિટ પણ એને ફ્રીમાં આપવામાં આવે છે। તો આનાથી ઘણા દર્દીઓને રાહત થાય છે અને જે છેવાડાના માનવી છે, ગરીબ માણસ છે, આ લોકો માટે આ યોજના ખૂબ જ ઉપયોગી છે। गिर सोमनाथ की जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर शीतल राम ने बताया कि इसके लिए जिला कलेक्टर के जरिए फंड तालुका स्तर पर दिया जाता है। अभियान के तहत इसकी जांच मुफ्त में की जाती है। એ સિવાય અમારા જિલ્લામાં છે ને ગળફાની તપાસ ટીબીની જે થાય છે એના માટે મશીન્સ પણ પહેલાં 2 હતા, અત્યારે 6 આવી ગયા છે। એ પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ મિનરલ ફંડ અને કલેક્ટર સાહેબના પ્રયત્નોથી અમે દરેક તાલુકા લેવલે આપી દીધેલા છે, એટલે ઝડપી અને ફ્રીમાં નિદાન થઈ શકે। એક ટેસ્ટની કિંમત અંદાજિત 1500 રૂપિયા હોય છે। टीबी हारेगा भारत जीतेगा के लक्ष्य की दिशा में गिर सोमनाथ जिले की यह पहल दिखाती है कि राज्य सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, समर्पित हेल्थ सिस्टम और समाज के सहयोग से किसी भी गंभीर बीमारी को हराया जा सकता है।